Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat from FEI Higher Secondary Institute. I am with chapter number 17. Chapter is about some natural phenomena, and it is it's a science, and I will discuss in this topics concept of lightning and what are electric charges, how they develop, how they what are the types of electric charges, how it transfer takes place in charged bodies, and third topic in this I will go to take. It is the first lecture about this chapter and including unit third examination. And third topic is safety for lightning. Lightning is a natural phenomena. It takes place anywhere, anytime, and what safety measures will you take in order to prevent yourselves. Then today is the concept about the lightning. How lightning takes place. It is a natural, we can say a natural phenomenon, a natural phenomenon. एक नेचुरल फिनोमिनन है. हाउ इट टेक्स प्लेस. इट टेक्स प्लेस बेटा याद रखिए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ electric charges in clouds. जो बादल बनते हैं आसमान में, in the sky there is cloud formation, there is accumulation of electric charges. When there is accumulation of electric charges, and in this lightning process, lightning is the flow of energy in the form of light. When there is flow of, असल में क्या होता है during the lightning, अभी मैं बताता हूँ इसमें. There is a rush flow of electric there is rush flow of electrons are charges which bear negative charges, or rush flow of electric charges from one place to another place. What makes electrons to rush, I will tell you about. Then this is the accumulation of charges in clouds, and there is thundering, and there is thunder and lightning are the natural phenomenon. First thunder takes place. Before there is a lightning, there is a thundering, there is thundering, there is thundering, and there is the lightning process. It is in the form of sound and it is in the form of light. Both are the natural phenomena we are going to discuss. Now, how it takes place. Same lightning process is seen by the. It is first noticed. This was first noticed by Benjamin Franklin. Benjamin Franklin was the scientist, American scientist था, who noticed first this phenomena takes place in the sky. That in the sky there is, he told us, in the sky there is electric charges. There is electric charges in the sky, and they anywhere flow from place to place, and there is a release of energy in the form of light and in the form of sound. In the form of sound there is thunder. In the form of light there is in the form of lighting there is the light flow. What are the sound? जैसे कि बादल गरजते हैं, that is thunder. आवाज पहले आती है, फिर बाद में मतलब लाइट, रोशनी, bright light, there is flow of bright light. Both is the thunder and the lightning takes place in the sky. And as first noticed by the Benjamin Franklin,
in as an American scientist for first notes, इसने कहा इस phenomenon को इसने नाम दिया it is a lightning, and यही lightning इसने कहा कि same case when you take during the winter's cold weather you take the sweater from by your body, आप अपने स्वेटर निकालते हो बाहर, अपने बॉडी से निकालते हो, क्या होता है in the dark आपने ऑब्जर्व किया है whenever you take off your your sweaters, you take off your woolen coat, आपने क्या देखा in the dark usually there is a spark, there is a sparkling while taking off your, there is a formation sparkling takes place while taking off your coat, while take off your coat, your coat, that is the woolen coat, जब भी आप बाहर निकालते हो there is a sparkling, वो spark जैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो सेम केस है, वो इस प्रोसेस से, इस फिनोमिनन से मिलता जुलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा जो lightning that take place in the sky and there is a sparkling, there is a formation of spark whenever you take your woolen socks, you take your woolen sweater, woolen coat, then same phenomena is there. Actually what happens there is an accumulation of charges, and by a chance, by some time there is a flow of the charges from place to place, and when they flow, then when there is a flow of charges, especially negative charges, when there is a flow of negative charges, that is electrons, whenever there is flow of electrons there is production, there is produce of electric current. This is actually the electric current in the form of light, in the form of sound produced there in the form of light, as a energy is releasing where there is a full of charge. First of all हमारे जब भी हमें दिन भर वो स्वेटर पहना हुआ है, वूलन कोट पहना हुआ है, हमारे बॉडी मूवमेंट इसके साथ क्या हुआ होता है, चार्जेस डेवलप हुए होते हैं। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मतलब डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय रबिंग करने से इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं। क्या होता है जब भी हमारे बॉडी मूवमेंट से वो वूलन कोट या वूलन स्वेटर वो चार्ज हुआ होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, and whenever we make a movement in that coat, in that sweater, there is a chances of flow of electric charges from place to place, in the form of light and in the form of sound. It is a phenomenon of lightning. First of all I will give the explanation of the lightning by taking this example, how it takes place. Lightning, you say in the clouds, these are the clouds, these are clouds, in the clouds, I will show you here in the diagram. These are the clouds, and I will take here this is the, dear student, this is the earth surface, and earth surface, you can say these are the plants, these are some are short, these are the plants, and these are the houses here. This is the house, here, so then here is also the something, this is the person walking. क्या होता है when there is a cloud formation? Clouds are made up of the, it is a accumulation, it is the aggregation of water molecules, vapors का जमा हुआ, dust particles का जमा हुआ. When there is a movement in the gaseous particle, there is accumulation of charges. When there is accumulation of charges, देखा जाता है clouds में there is a formation of positive charges which forms the upper layer in the clouds. There is formation of positive charge in the upper layer of, similarly there is the negative charges in the lower layer of clouds के जो lower layer होता है, नीचे वाली layer होता है, there is accumulation of negative charges, and clouds के जो upper layer होता है, there is accumulation of positive charges. Similarly in case of this cloud, it is a cloud first, it is a cloud second. In the cloud second also there is accumulation of
positive charges upwards, and similarly there is accumulation of negative charges downwards in the clouds. The negative क्या होता है जो अर्थ सरफेस होता है, it is the earth surface. It is the earth surface. ध्यान दीजिए how lightning takes place. On the earth surface there is equal, you know the earth is a neutral, electrically neutral. ना तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना कि नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे कि एक एटम, ना ये एटम पॉजिटिव होता है ना ये एटम नेगेटिव होता है. एटॉमिक पार्टिकल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होगा, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. और बेटा ये आपको पता भी होगा कि ऑलवेज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. क्या मतलब, जो लाइक चार्ज, याद रखे पहले इस चीज को, नंबर 1 में क्या है, लाइक चार्जेस अगर मैं लूंगा ये लाइक चार्जेस, ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट दे रिपेल, भाग जाते हैं. अगर हम ये देखेंगे पॉजिटिव चार्ज दे विल मूव अपार्ट, रिपल, भाग जाएंगे. देयर इज रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन, भाग जाएंगे लाइक चार्ज. या हम नेगेटिव चार्ज को पास में रख देंगे, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ रखेंगे, देयर इज आल्सो ए repulsion. इनमें भी होगा repulsion. There is a repulsive force, repulsion. It is the rule number first. We have to always remember that like charges repel and like charge, चाहे like charge नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, they always repel. ये याद रखे पहले इस चीज को पढ़ाने से पहले. And you know the unlike charges, two different charges. अनलाइक चार्ज जो होते हैं दूसरे पॉइंट में, जैसे कि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे चार्ज नेगेटिव, या दूसरे चार्ज नेगेटिव, तीसरे चार्ज. इन दोनों सूरतों में यहाँ पे क्या होगी बेटा, देयर विल बी ए अट्रैक्शन, देयर वुड बी अट्रैक्शन. यहाँ पे आप देखोगे यहाँ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन. here is the attractive force, attraction between the unlike charges. ये यही बात है यहाँ पे, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ये दो चीजें आप याद रखोगे. नाउ वी विल गो. द अर्थ जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 5 है ना. तो नेगेटिव चार्ज, if there is also negative charge 1 2 3 4 5, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी 5 है. तो +5 -5, जब भी आप +5 और -5 कर लोगे क्या निकलेगा यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा यहाँ +-5 that is the 0. You will get the net charge 0. But when there is equal number of positive charges and negative charges, when there is equal number of positive charge and negative, then the net charge is equal to 0. Then we can say that is electrically that is neutral. Electrically neutral क्या होता है, charge, there is no positive charge, no negative charge. Here in the case when there is equal number of positive charges and it is equalized by equal number of negative charge, net charge is 0, it is a neutral. को इसी तरह से हमारी जो अर्थ है, it is a electrically neutral. electrically neutral क्या होता है, अगर इसमें positive charge है, if here is a positive charge, there is also negative, positive negative, positive negative, positive negative, positive negative. If there is positive and negative charge on the surface of the earth, now here is the equal number of positive and negative charge. पॉजिटिव कितने 1 2 3 4 5 है ना, और नेगेटिव कितने 1 2 3 4 5. Good, then earth surface is electrically neutral. Now what happens here, the clouds जो इसका जो lower surface होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है. this negative charge बेटा याद रखिए, this negative charge will show this, कि इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या दिखाएंगे, they will show here the repulsion, repel कर लेगा. here is the repulsive force, पूरा ध्यान दीजिए, repulsive force, that means here is the repulsion. when there is repulsion,
क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, अर्थ सरफेस का जो नेगेटिव चार्ज है और क्लाउड्स का जो ये नेगेटिव चार्ज है, दे शोज द रिपल्सिव फोर्स, दे विल मूव अपार्ट, दे विल मूव फॉर अवे। देन ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये नीचे को नीचे चला जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, वो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज भाग जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा। सिमिलरली थोड़ा यहाँ दूर दिखाएंगे, यहाँ आया, इस तरह से ये चार्ज दूसरा चार्ज अब है। इट विल ऑल्सो शो द रिपल्सिव फोर्स, देयर इज रिपल्शन, व्हाट हैपन्स नाउ देयर, इट विल किक ऑफ दिस चार्ज हियर, इट विल किक ऑफ, ये भी इट विल मूव अवे क्योंकि लाइक चार्ज है, इट विल मूव अवे। इसी तरह से ये सारा ये यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज जितने भी है ये दूर भागेंगे, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे, अर्थ सरफेस डीप, दे विल ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल गो डीप टू द अर्थ सरफेस। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज भी डीप आके यहाँ रहना शुरू कर देगा, यहाँ पे ये, तो देयर इज नो नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि नाउ आपको पता है, आपको समझ में क्या आया होगा, यहाँ पे जो लाइक चार्ज है उन्होंने रिपल किया, जो यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इसका इस क्लाउड का इफेक्ट यहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज विल गो डीप इनसाइड द अर्थ। यहाँ पे जो अर्थ सरफेस पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज विल व्हेन द ट्रीज प्लांट्स आर closed, their roots are in the soil, also the positive charge will express on the surface of the plant। पूरा ध्यान दीजिए, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज भी हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, यस, ये भी यहाँ पे इन द ह्यूमन बीइंग देयर विल ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आर द इन टच विद द ग्राउंड सरफेस, दिस पॉजिटिव चार्ज विल ऑल्सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द human body by the earth surface to the human body, by the earth surface to the building, by the earth surface to the trees। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे attraction होगा, positive charge will attract, that means positive here the negative charge will attract here the positive charge। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा attraction। ये भी है ना, अभी मैंने बताया ना second unlike charge, here is the unlike charge, negative charge positive, they will be attracted and these positive charges will try to move up and they will start accumulating on the surface of the earth। When they on the surface of the earth, in the trees, in the buildings, in the human beings, they start that means here will be जितने भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए, जितने भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे क्लाउड्स में, उतने पॉजिटिव चार्ज अर्थ सरफेस पे आएंगे। नाउ अब क्लाउड्स में फ्रिक्शन तो होता ही रहता है, खलबली होती है, जितना भी खलबली क्लाउड्स में आएंगे। नाउ हियर द नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, हियर द नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द, बिकॉज हियर आर द अनलाइक चार्जेस, unlike charges attract, here is the force of attraction, that the negative charges have tendency, have capable to move towards the negative charge, positive charge, यहाँ पे unlike charge attraction होगी। वो इस बिना पे क्या है, आपको पता है कि क्लाउड्स में बहुत सारे क्लाउड्स दिन भर बन जाते हैं, there is formation of clouds, there is movement, random movement in the gaseous particles, and there is gaseous particles are made up of the positive ions, negative ions, बहुत सारे, मान लीजिए यहाँ पे कंसिडर कीजिए, बहुत सारे नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो गए इस क्लाउड में, और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए किसमें, क्लाउड्स में। क्या होता है जब बहुत नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑल द नेगेटिव चार्जेस sometimes get chance to move towards the surface of the earth। When all the negative charges move towards the surface of the earth, when they start to move towards the surface of the earth, what happens here, यहाँ पे जो all the negative charges will move towards the positive charge, all the negative charge will move toward the positive charge। आपको पता है during the lightning there is a citric means lion, there is a ray, citric means ray, इसको you mean by the ray, citric of light,
a streak of light flows. See, when it flows in many directions and some streak of light flows towards the surface of earth, क्या होता है असल में वो क्या होता है, असल में वो होता है फ्लो ऑफ, और याद रखिए rush flow of electrons. There is rush flow of electrons. When there is rush flow of electrons, when there is flow of electrons towards the plants, towards the buildings, towards the earth surface, there is a rush flow of electrons and there is a releasing of energy. आपको पता है lightning होने से पहले in the ancient times people afraid of the early man, primitive man, afraid of the lightning and thundering, they hug the trees, they hug each other and they enter into the caves. Now these days we're not afraid at all, but there should be a precaution, there should be a protection of the lightning. They are sometimes prove dangerous. इस लाइटनिंग के कारण क्या होता है, आग लग जाती है कभी कभार. when there is a huge flow of electrons, whenever there is a flow of electrons, there is a production of electric current. When there is flow of rush flow of electrons from by this cloud number first to the surface of the earth, to the surface of the plant, there is also a positive charge accumulation. They in the tendency so that they could attract these, all the negative charges are attracted towards the earth's surface, because earth's surface created positive charges on the surface and negative charges make a rush in order to have attraction towards the positive charges on the surface of the earth, and there is a streak of light flow, and this is known as the phenomena as the lightning takes place. Also it is not always the lightning takes place towards the surface of the earth, towards the buildings, towards the surface of the plants, to the person walking in the open field. Not also sometimes lightning takes place cloud to cloud. These negative charges particles are in the clouds and they also are attracted by the second cloud के जो positive charge है उनसे attract होते हैं. यहाँ पे भी attract, there is also a flow of huge flow of positive negative charges towards the clouds of towards the second clouds bearing the positive charges. Here is also the lightning. आपने देखा होगा sometime when there is a lightning, there is a bright white light, there is a flow of streak of light flow multiple directions, cloud to cloud. Inside the cloud there is a formation of lightning towards the surface of the earth. To the forest area there is a flow of light, there is a streak of flow of light, there is a streak of flow of light towards the earth. There is also a streak of flow of light to the other clouds. It is also here why there is a streak of flow of light to the cloud, because cloud number first इसके जो positive charge accumulation of negative charges है, they tend to move towards the cloud number second, which have the accumulation of positive charges, and there is a formation of still lightning. There is a lightning, there is a release of energy. First we heard the sound, then there is a light, and the process is known as the lightning. This is the phenomenon of the lightning. And therefore when a human is walking on the surface of earth, he should take the care when he should not be on the top floor of the building. There is also a chances of attraction of the there is a danger of the lightning, and we should not have a walk on the open field, and we should not remain to the short or long trees, because they are very, because the earth surface, यहाँ पे earth surface की बात हम कर लेंगे, यहाँ पे earth surface नजदीक है with the trees, they are very near to the clouds. With the buildings, earth surface is very close to the clouds, and a human being is very, that as per the height is concerned. As we take the trees, we should never take the shelter under the tall trees. We should never have an open walk. And if you are in the car, you are in the safe. In the car you are safe, and in the car you are safe.
अगर गाड़ी में हो अब स्टिल देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बिकॉज हियर इज, ये कहा जाता है कि गाड़ी में जो टायर्स होते हैं रबर टायर्स, मतलब यहाँ पे वो खतरा नहीं रहता है, यहाँ पे हमें अर्थ सरफेस से नॉन कॉन्टैक्ट रहता है ड्यू टू द रबर टायर्स, नॉन कॉन्टैक्ट रहता है। देयरफॉर इट इज रबर जो है यहाँ मतलब दिक्कत पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है ड्यू टू द रबर टायर ऑफ द व्हीकल, and we remain a separation here is a separation between this car and the other surface. Here positive charge accumulation is impossible, and अगर पॉजिटिव चार्ज वहाँ होगा वो हवा से मिलकर मतलब गाड़ी के कंटेनर पे लग सकते हैं। एंड योर कार's door should be closed, window should be closed, and you are safe inside the car when there is a thunder and lightning. This is all about the phenomena of lightning, how lightning takes place. How we protect our buildings by the lightning, our other things. It was there is a conductor, lightning conductor discovered, lightning conductor discovered by Benjamin फ्रैंकलिन। अभी मैंने इसी ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया और इसी ने इस डिवाइस को डिस्कवर किया है। मतलब इस डिवाइस में क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस फॉर लाइटनिंग फिनोमेना। ये क्या करते, इससे हम अपने घर को जो प्रोटेक्ट आवर हाउसेस, जो भी टॉल बिल्डिंग्स होते हैं क्या होते हैं, we can protect our houses by the lightning conductors and protect us by the lightning। क्या होता है, जो भी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होते हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स उनको हम क्या करते हैं, we install this setup। हम इस सेटअप को वहाँ इंस्टॉल करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, पूरा ध्यान दीजिए फिगर पे, इट इज अ बिल्डिंग हियर एंड दिस इज अ टॉल बिल्डिंग एंड इट इज द अर्थ सरफेस हियर, इट इज अ टॉल बिल्डिंग हियर, इट इज अ टॉल बिल्डिंग। इसी टॉल बिल्डिंग में क्या करते हम, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल किया। मान लीजिए ये लाइटनिंग कंडक्टर, व्हाट इज दिस, इट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर एंड when there is a flow of the electrons by the clouds to the earth surface, first किस पे पड़ेगी वो बिजली की किरण, वो लाइटनिंग obviously to the building top, क्योंकि building top is very close to the clouds। when there is streak of light and there is a flow of electrons, there is flow of negative charges। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे सीधा इसको ग्राउंड कर देते हैं हम, we make a grounding। वो इसमें क्या होता है, when there is flow of negative charge to this and sometimes there is light, there is high energy, so that to protect our building by catching fire, by damage, by catching fire, तो we should protect our building by install this जो मैंने रेड कलर से बनाया यहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड किया, ग्राउंड I provided here the earthing, इसको हम कहते हैं अर्थिंग। मैंने इसको ग्राउंड किया है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पे वो सीधा के सीधा क्या होगा, डिस्चार्ज विल बी लीक आउट टू द अर्थ सरफेस एंड अर्थ सरफेस इज सिंक ऑफ, इट इज अ ह्यूज सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सारा के सारा जो चार्जेस होंगे वो लीक होगा, किसमें, अर्थ सरफेस में लीक होगा। देयरफॉर आवर बिल्डिंग शुड बी इंस्टॉल्ड विद lightning conductors, they protect us by the phenomena of lightning, it is a lightning conductor। lightning conductor में क्या होता है पहले मैं बताता हूँ आपको बेटा। यहाँ पे इसमें एक मेटेलिक रॉड होती है, मेटेलिक रॉड होती है, वो भी कॉपर की होती है, और लॉन्ग मेटेलिक रॉड हम ये आपने देखा होगा जो चर्च होते हैं, चर्चेस,
मस्जिद वगैरह होते या टेंपल वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग्स होते हैं, स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े टॉलेस्ट बिल्डिंग जो होते हैं, उन पे हम ये लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल करते हैं। मेटेलिक रॉड होती है और लॉन्ग वायर होती है, एंड लॉन्ग वायर किसके साथ होता है? इट इज ग्राउंडेड, इट इज ग्राउंड, देन इट इज ग्राउंड, व्हेन इट इज ग्राउंड इसी का मतलब होता है वो मेक ए लीकेज, leakage of electric charges. Where in the lightning there is a flow of negative charge, there is a flow of huge amount of electrons, with it is a electricity, with it is the electric current. When it strikes to anything, it will burn, it will catch fire, it burns. Then to protect our buildings, our trees, by have a sudden broke out of fire, we should protect it. Then we should properly install the lightning conductor as discovered by Benjamin Franklin. Now it is all about the lightning, and what are the safety measures for the lightning purpose के लिए safety measures क्या है? safety measures क्या है? For the lightning purpose, what are the safety measures? Safety measures, when there is a lightning, what safety measures you will take? Number one, not sit below and not below under tall trees, क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी मैंने डायग्राम बनाया, tall trees they are touched with the earth surface. When earth surface is positively charged, the positive charges discharge into the tip in the plant में भी वो accumulate होते हैं, and plants are very close to the clouds. When there is flow of the lightning, they first strike the trees, then the earth's ground surface. ये याद रखिए, हमें नहीं रहना चाहिए under the tall trees. And if you are in the car, you are safe, because you will not be struck by a lightning, because and you are ensure that your car's door window should be shut off, and it will not allow the electron charges to flow inside the car. Then inside the car you are safe. And third one is you should not be in open area. आप open area में नहीं रहोगे. Always try to be inside your home, inside your house, inside a protected shelter area, and you should not take क्योंकि आपको जानते जब आप ग्राउंड सरफेस पे होते हो, and also the earth surface positive charges accumulate also in your body, and there is also the attraction of the negative charges, electrons that is accumulate in the clouds. They make a rush, they will attract towards you, and there is a problem, there is a difficulty, that is a very dangerous, and you should not be open to walk in open fields. And then during the lightning you should obviously take a shelter in the houses, in the homes. And fourth one is switch off your mobile phones को उस वक्त स्विच ऑफ करना है. टीवी, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको भी इंश्योर करिए, उनको आप स्विच ऑफ करके रखोगे. एंड फिफ्थ वन इज टू इंस्टॉल, अभी मैं कह रहा था टू इंस्टॉल प्रॉपरली ए लाइटनिंग कंडक्टर. याद रखिए इसको, लाइटनिंग कंडक्टर को आपके बिल्डिंग में इंस्टॉल होना चाहिए, लाजमी है. To install properly lightning conductor is device which protect us by these are the few safety measures. It is important question and also in our examination during the lightning process. Now is the concept of the electric charge. Electric charges क्या होते हैं?
charges. We have two charges. First one is the positive shabash, positive electric charges. Then second is the negative electric charges. हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होता है, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. हाउ दे डेवलप. थर्ड इज द न्यूट्रल चार्जेस. इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है. जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस होंगे हम उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्जड बॉडी, और जिस बॉडी में नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्जड बॉडी. यस. एंड जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्जेस है ना तो नेगेटिव चार्जेस की एक्यूमुलेशन हो, हम उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी. net electric charge is 0. This is, here we can say here the n positive, here is the n negative, here is the n neutral. में ये आते हैं, इसमें ये आते हैं, याद रखिए. Now question is how we develop electric charge. Was the Greek philosopher who first discovered, observed the development of electric charges, and electrostatic concept comes into play. That electrostatic is due to the electric charges. And how these electric charges development of electric charges. Development of electric charges. कैसे develop? देखो, if you by the rubbing process, what is this rubbing process? It is a mechanical process. Rubbing process, by a mechanical process. By this mechanical process we make two things. We make two or more things. We make two or more things. Two things to have friction to each other. To have friction. Rubbing is the friction to each other. उस कारण से क्या होगा? There is the development of electric charges. हमने देखा electric charges develop होता है simpler article, जो simpler things होते हैं, simpler जो चीजें होते हैं, things, उनमें वो development होती है. जैसे कि आप कहोगे कि we can develop in the glass rod, in the silicoloth, we can develop in the polythene, we can develop in the balloon. Electric charges can be developed in these things. There are etc. other things wherein we can develop electric charges, positive or negative electric charges by rubbing process. It is a mechanical process जिसमें two or more different things we have a friction. Then by that friction, by that rubbing, we create charges, electric charges in the simpler things like glass rod, silicoloth, polythene, balloon. If you talk about the wool, polyester, nylon, etc. or them, I already told you, there are the many simpler things wherein we can, our body here also include body here, we can say the body here also include in this, wherein we can develop the electric charges on rubbing. What happened? I will take it here an example to explain this thing, how we develop electric charges in simpler articles, in simpler things, in simpler objects. If you take the glass rod, first of all you take the, I will draw it here in this way. You take the, simply it is the glass rod, say it is the glass rod, and this, first of all you consider that it is
electrically neutral. मैंने पहले ही बताया what do you mean by electrically neutral. It have a same number of positive and negative charge. It is electrically neutral. M0 electrically neutral glass rod. तो इसको क्या है, I will take a silic cloth. I will take the silic. I will take the silic cloth here. In a silic cloth there you should consider before rubbing how there is a development of charges and how there is a transfer of charges. ये आप इसमें पढ़ोगे. before rubbing में क्या होता है, there is equal number of positive charge, there is equal number of negative charge. Here both the things are, it is also electrically neutral. You should. Now when there is rubbing, when there is after, we can say after rubbing, it is the second, it is the first, then it is the second. After rubbing process, what in the after rubbing process, what then take place when you take the glass rod and rub with the, say, the silic cloth. In this way you are going to rub it with the silic cloth. What takes place, you should remember that always negative charges, that means always negative charges. जो मैंने रेड कलर से दिखाया, यहाँ इसमें ब्लैक कलर से दिखाया, तो always जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव चार्जेस और also called negative charges को कहा जाता है electrons. इनको ऐसे रिप्रेजेंट करें. E for electron, negative charge हम ऊपर रखते हैं. It is a symbolic representation of electrons. ये क्या होता है, always they flow from one object to another object. Here are the two objects, glass rod and the silic cloth. हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो भाग जाते हैं. It depends upon the nature, property of material. कौन लॉस कर लेगा नेगेटिव चार्ज, कौन इसको एक्यूमुलेट कर लेगा, गेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे क्या हमने देखा, यहाँ पे मान लीजिए 2-3 नेगेटिव चार्ज उठ गई, तो वो यहाँ पे बैठ गई. वो नेगेटिव चार्ज पहले में, आई विल सी यू इट हियर, सॉरी, इसको मैंने पहले रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें डायग्राम से क्लियर हो. तो यहाँ से क्या मैंने बताया आपको, पहले इसको मैं वापस ठीक कर देता हूँ. यहाँ देखिए कुछ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली. नर्व और रबिंग क्या होता है, गिलास रॉड जो होता है, गिलास रॉड जो है ये पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. याद रखिए हमेशा, इट इज अ कन्वेंशन रूल. जो पॉजिटिव चार्ज जो गिलास रॉड होता है, गिलास रॉड ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्जेस. और जो सिलिक है वो क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज. क्या मतलब, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज उड़ गए ऑन रबिंग से, वो इसमें बैठ गए. अब एक्स्ट्रा चार्ज इसमें, एक्स्ट्रा चार्ज अब इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. और इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस क्या आ गए, वो रब करने से, जब भी हमने दो चीजों को इंटरैक्ट में लाए, इन ऑन एन इंटरेक्शन, when there is a rubbing, there is an interaction between the two objects. When there is interaction between the two objects, यही इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में बैठते हैं. वो यहाँ पे जो गिलास रॉड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उठ गए, they lost, they move away and start accumulate in the here. They start to accumulate in the silic cloth. Hey, therefore यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज किसके आए, पॉजिटिव के, और यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज किसके आए, नेगेटिव के. Therefore silic cloth becomes electrically negative charges and glass rod becomes electrically positive charge. In this way we can make the objects electrically charged, positive charges, negative charges. What are